All right. All right. So magnetism part 2. Yes, sir. And what we study today is some basic definitions of magnetism. Okay, some basic definitions of magnetism. So one is obviously you know about what is a magnetic field. Magnetic field is the first thing you study. It is a space around the magnet in which you can feel the influence, जहाँ उसका असर देखा जा सकता है, राइट? सो इट्स अ स्पेस Okay. अराउंड, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, Okay. around in which you can feel the influence. अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है। और तो इन्फ्लुएंस होता नहीं इसका कुछ. हम्म, Okay, then we already know what is a uniform magnetic field from previous chapters. Okay, which is cross is inwards equally spaced, and dots this is a uniform Yes, sir. magnetic field, right? Hmm. Outward inward, so cross is inward. Yes, sir. And so if you have to show it horizontally, then we show it like this, equally spaced. ठीक है। All right, let's go to the poles. I think we already know South Pole or North Pole, the point of entry and exit, Yes, right? So if this is your magnet, then there are points on it which are going to show you the point of Raghav. Okay, थोड़ा बड़ा बन गया. वो कोई बात। Okay, so these are the poles of the magnet. Yes, Then sir. the line joining the poles is called as the magnetic axis, बिल्कुल dipole की तरह. So this line is called as the magnetic axis. Okay, ठीक है। and then we have magnetic equator, बिल्कुल वैसे ही perpendicular bisector. हम्म, उसमें भी होता है, P निकालना होता है डाइपोल मोमेंट. इसमें इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, और मैग्नेटिक लेंथ. ओके, सो ये इक्वेटर है, ये आपका एक्सिस हो गया, हम्म, magnetic axis. Okay, this is magnetic equator. This is magnetic equator. This is magnetic axis. ठीक है? हम्म, और let's talk about magnetic length. The distance between the two poles is called as a magnetic length. So this distance is called as the magnetic length. Okay, so the distance between the two poles. yes, sir. जो पोल होते हैं ना, बिल्कुल एंड पे नहीं होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल कोने में. तो यू कैन से कि द लेंथ ऑफ द मैग्नेट शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ. इट इज नॉट. पोल्स आर नॉट लोकेटेड हियर. पोल्स थोड़े से ना अंदर की तरफ होते हैं. तो जितनी मैग्नेट की लंबाई होती है उतना मैग्नेटिक लेंथ नहीं होता. हम्म,
ठीक है. सो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स. मतलब थोड़ा छोटा ही होता है ये. अगर आप फिजिकली एक मैग्नेट को नापोगे इंच टेप से तो वो बड़ा निकलेगा, लेकिन पोल्स का डिस्टेंस कम निकलेगा, वो थोड़े अंदर होते हैं. हम्म. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कूलम्स law of magnetic force. So if pole is like a charge, then the force is proportional to the product of individual pole strength m1 m2 जो दोनों हो गए upon r square. Very similar to what you study in electric field. सेम ही है, उसमें भी चार्ज थे. यहाँ पे इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ पिक्चर में आ जाती है. ओके, सो दिस इज Q represents the pole strength of North Pole, या जो भी दो पोल इन्वॉल्व हैं. Sometimes you can have two different magnets repelling each other or attracting each other. तो दोनों की अलग अलग अगर पोल स्ट्रेंथ है. So this is pole strength. Okay, and this is the distance between the two poles. So F is equal to K Q M1 Q में M इसलिए लिख रहे हैं to tell you it's magnet we're dealing with, not the charge. Yes, sir. Right. So if the magnetic strength is unity and R is also 1 meters. So if there are two poles which are of unit magnitude and at a distance of 1 meter, then the force comes out to be equal to this K which I have written is basically a constant and is K. तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो F is equal to K comes out to be mu upon 4 pi is equal to 10 raised to. This is the permeability of the space. We will discuss what is permeability. But if you have to define what is a unit pole strength, then it is defined as a unit magnetic pole is a pole which is when placed in vacuum. So ये mu naught का मतलब है permeability of the medium between the two poles. So for example, this is a bar magnet like this and this is another bar magnet. तो इनकी इंडिविजुअल पोल्स तो इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं. Yes, sir. यहाँ पे राइट, इसकी कुछ पोल स्ट्रेंथ है और इसकी कुछ पोल स्ट्रेंथ है अलग. हाँ. तो मान लो हम इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना चाहते हैं. सो वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड यू कैन सी द मीडियम बिटवीन देम इज एयर और वैक्यूम. Yes, sir. तो उसकी जो क्वालिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड को ट्रैवल करने देती है उसको बोलते हैं परमेबिलिटी. स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है बट आएगी. तो हमें अभी डिफाइन करना है व्हाट इज वन यूनिट पोल. सो इफ दिस इज 1 and this is 1 and the distance between them is 1 meter, ये 1 unit है, ये भी 1 unit है, then the force between these two comes out to be this much newtons. ठीक है. राइट. सो जैसे कि 1 कूलम डिफाइन करने के लिए भी यही करते हैं. सिमिलरली 1 यूनिट मैग्नेटिक पोल. सो 1 यूनिट मैग्नेटिक पोल is the pole which when placed in vacuum at a distance of 1 meter produces a force of 10 raised to power minus 7 Newton. So it gives you, so हमने डाले हैं एक्चुअली, वही ये भी 1 डाला है, ये भी 1 डाला है, ये दोनों 1 डाले हैं और डिस्टेंस भी 1 डाल दिया. तो जो भी फोर्स आई it has come because of this na, that the pole is 1 and the distance is also 1. What? Yes, sir. So two poles separated by, अगर दो पोल हैं which are separated by a distance 1 meter are giving you this much strength of force. Repulsion और attraction हो सकता है ये north हो, ये south हो, या दोनों ही north हो. We will say that the pole strength is 10 raised to power minus, sorry, the poles we have used are of unit magnitude. ठीक है. Yeah.
तो क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम वी विल कम टू द, आई एम जस्ट सीइंग एनसीईआरटी में what language has been used. So it's magnetism and matter in NCERT. Yes. Magnetism and matter. Okay. Okay, but some good stuff comes out of it. So magnetic field lines. Okay, that is the next thing. Bar magnet is an equivalent solenoid. So dipole in a uniform magnetic field. Electrostatic analog. ठीक है. Magnetism and Gauss law. ओके, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंडेक्स. कल हमने मैग्नेटाइजेशन देखी थी, रब करने से जो ससेप्टेबिलिटी के फॉर्मूले में थी Yes. m/h. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हो गए, जबकि वो एंड में आता, हमने पहले ही कवर कर लिया, बट और डिटेल में भी हम जाएंगे सो दैट वी कैन एड्रेस द. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द टॉपिक ऑफ magnetic dipole and magnetic dipole moment. Dipole moment. Since it is a magnet, only can exist as a dipole. It cannot be a unipole. North or south have to be together. You can't have a separate structure. It has to be there. And how do you describe a magnetic dipole? The physical quantity which is used to describe the magnetic dipole is the magnetic dipole moment, bilkul identical to electrostatics. So in the case of a magnet, the magnetic dipole moment is written like this and is given by the pole strength multiplied by 2L. वहाँ पे 2A होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. Q कोई भी चार्ज होता है डाइपोल में, Q प्लस माइनस Q होते हैं, एंड 2A इज द डिस्टेंस. वो डेरिवेशन में लेते हैं if you remember. Okay, Q, Yes. and so if you have to write the units, we can write the units of magnetic dipole moments are joule per Tesla, or it is ampere meter square. These are the units of the magnetic dipole moment, and the direction is from south to north. ठीक है? Or what else can you Yes, know sir. about it? So, okay, pole strength जो Q होता है, pole strength, which is the Q you see in the formula, the Q, this Q, इसके जो units हैं, they are ampere meters. Okay? Okay. And mu naught, which you saw in the Coulomb's law of magnetism, Q m1 Q m2 upon r square. So ये न्यूटन है. म्यू नॉट के जो होते हैं, दिस इज बेसिकली परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू. परमेबिलिटी तो हमने सब जगह यूज करी है मैग्नेटिक इफेक्ट्स के अंदर. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बहुत जगह यूज करी है. Okay, so it is mu naught is equal to 4 pi into 10 raised to power minus 7 Tesla meter per ampere. You can just put it, ये दोनों एम्पियर मीटर, ये मीटर स्क्वायर, ये वाला T, ये न्यूटन है, तो इसके यूनिट आ जाएंगे. इनके एम्पियर मीटर यूनिट्स हैं, इसका मीटर स्क्वायर है, इसका न्यूटन है, तो इसका भी आ जाएगा. फिर कर लिया डिराइव. वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 और यूनिट्स हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ठीक है? ठीक है. ओके, सो लेट्स सी इफ यू आर to calculate the,
So these formulas are applicable to any magnet. Can be a bar magnet, जो हमारे कोर्स में ज़्यादातर bar magnet ही है. Okay. So let's say you have a, let me see any question in NCERT. Bar magnet, magnetic field lines थी इसने. अच्छा, I think they have not. अच्छा, okay. What they have done is they have kept this dipole. जैसे कि उसमें भी डाइपोल हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट, P इंटू ई, P क्रॉस ई, जो टॉर्क लगता है उसके ऊपर. फिर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, what is the tendency to rotate. Similarly, in Yes. this also we have a bar magnet being kept. Bar magnet is a dipole, and that dipole is being kept inside a magnetic field and it rotates. टॉर्क लगता है. मैं देख रहा हूँ जरा ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर. अच्छा, तो they have, as usual, they have deleted this. Okay. When a bar magnet of, okay, so they have not explained what is a dipole in a magnet, but they have straight away described that the bar magnet, which is a dipole, is kept in an external magnetic field. Then what happens? लेकिन ये समझाना भूल गए हैं कि डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी. Right, we have studied the dipole only. This is the magnetic dipole M. So this is missing in NCERT. Anyway, so let's talk about one numerical. So for example, you are given a situation of two bar magnets. So one bar magnet is this, the other bar magnet goes like this. So you have two bar magnets, and this is the south for it, this is the north for it, this is north for it, and this is south for it. Okay, and the total distance between them is 40 centimeters. Okay, Okay. so this is, for example, any distance 40 cent, whatever, and the gap between them is some gap. Okay, so this is, for example, some gap between them, and they're of equal length. So therefore, each one of them is, say, they are, so let's say that this is 50 centimeter, this is 10 centimeter, तो बैलेंस 40 बचा. So दोनों की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो गई. टोटल क्या, आउट ऑफ टोटल. So this is 20. Okay. And this is also 20. So you know the magnetic length. Hmm. And you know the R between the two poles. The question is, what is the repulsion between N1 and N2? So let's say this is the first S1, N1, N1, S1. You have to find the repulsion between the two N's. Sorry, N2 लिख लेते हैं. Second magnet है. So F N1, N2 will be given by mu naught upon 4 pi multiplied by the individual pole strength is also given to you. So the individual pole strength of first one is given to be, say, 40 ampere meter, Yes, sir. and that of the second is given to be 30 ampere meter, right? So put the values, 40 into 30 divided by R square, 0.1 का square, we know 10 raised to power minus 7, Yes, sir. 10 raised to power minus 7 into 1200 divided by 0.1 whole square, answer. So whatever is a force, if you want to find between S1 and N2, so that will be attractive force. This was repelling because we found between N1 and N2. So you can find between sorry, यहाँ नहीं दिखाना होता है इसको. The right way to show S is here. थोड़ा सा अंदर magnet के. Hmm. So I'll just rub this off.
So you can find this distance also, right? This is 20 plus 10. So if I say S1 N2, so this is mu naught upon 4 pi. Attractive force होगी because they are unlike into, so अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा. Yes, sir. एक मैग्नेट के अंदर दोनों पोल स्ट्रेंथ बराबर होती है, सिर्फ उनका एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है. मल्टीप्लाई बाय अगेन 30. Yes, sir. The distance is 20 plus 10. Newtons. ठीक है. Put the value 10 raised to power minus 7. Okay. So this is one. और एक तो हमने ये यूज कर लिया फॉर्मूला, हाँ. the force between two poles. Then we have to use this formula, which is, do you see the word magnetic dipole moment? इससे पहले हमने जब मटेरियल पढ़ा था तो वहां पे वर्ड आया था सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल नहीं आया था मोमेंट, सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट था उसके Yes, sir. अंदर, which was due to the spinning and orbiting of the electrons. And this gives rise to magnetic field. तो जब हम origin of magnet पढ़ रहे थे तो उसके अंदर ये था, बट यहाँ पे dipole word आ गया उसकी जगह. So let's talk about now. For example, you're given a magnet, which is understood कि वो dipole ही होगा. There is no choice. Yes, sir. Right? So this is your magnet, and if this is your magnet, let's say अंदर ही, let me show you the magnets here. And if you show the magnet poles, the distance between the two is, for example, 10 centimeter. Okay, so which is a magnetic length. So the magnetic length is the real length. Physical length थोड़ी ज़्यादा है. So magnet अपने आप में तो लंबा है थोड़ा और ज़्यादा. Yes, sir. Okay, so this is the distance between the two magnets, and the strength is 20 ampere meter. And let's talk about this is centimeters. We're talking about distance, and individual poles are having some strength of, for example, 20 ampere meter. Right? So if you see the formula of dipole moment, it is the individual dipole strength जो दोनों की बराबरी होगी एक मैग्नेट, बार मैग्नेट में या किसी भी मैग्नेट में, मल्टीप्लाई बाय 2L, which is nothing but actually the distance only. So 20 centimeter is 2L. Yes, sir. वो लिखने का तरीका है बेसिकली, क्योंकि उसको आधी लाइन पे वो इक्वेटर बनाना होता है तो दोनों साइड ए की हो जाती है, बट दिस डिस्टेंस इज 2L ओनली, द डिस्टेंस बिटवीन द टू dipoles. So the magnetic moment का जो आंसर होगा, that will be equal to QM into 2L is equal to 20 ampere meter multiplied by 20 centimeter is equal to 40 ampere meter square. Okay. So magnetic, and you know the direction, right? The direction is from, पढ़ी थी अभी हमने, south to north. तो अगर मैं इसको साउथ दिखा देता हूँ और नॉर्थ दिखा देता हूँ, सो द डाइपोल मोमेंट आई हैव कैलकुलेटेड इज साउथ टू नॉर्थ. वो भी यूज कर लिया हमने. Okay, so let's move forward on. So this topic is completely missing in NCERT, by the way. Okay, they have forgotten to explain कि इन्होंने क्या करा, सीधा उठा के जो डाइपोल है ना, ये मैग्नेट, लिख दिया कि एक क्वांटिटी होती है डाइपोल M, और इसको उठा के एक मैग्नेटिक फील्ड में दिखाया है कि मैग्नेट पड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, और बोल रहे हैं कि इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा M into B, समथिंग लाइक Q क्रॉस E. बट M समझाना एनसीईआरटी वाले भूल गए कि M क्या होता है. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज मिसिंग कंप्लीटली. Okay. तो ये मिसिंग थ्रेड है उसके अंदर, इसलिए पूरा एनसीईआरटी पे इफ यू गो विद दैट रैशनलाइज कंटेंट, उन्होंने गलत टॉपिक भी काट दिए. ओह, अच्छा. नीट में तो काफी चैप्टर्स कट गए.
किसमें? हाँ। नीट के सिलेबस में। यस। तो जेई में भी कट सकते हैं। पर काट क्यों रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, मतलब अब तो क्योंकि कोविड नहीं है। नई एनसीईआरटी में भी नहीं है ना, क्योंकि। अच्छा अच्छा, वहां से लिंक बिठाया जा रहा यस सर। है। डिस्कस्टिंग है। बट आप क्योंकि अब नए इंजीनियरिंग में बच्चे जब नहीं पढ़ जाओगे, पाएंगे। वो तो यूज होते हैं सारे टॉपिक। हु विल यस टीच सर। यू? सामने वाला टीचर तो परेशान हो जाएगा हाँ। कि भाई तुम्हें क्योंकि यही नहीं नई आता। एनसीईआरटी में नहीं है तो वो पढ़ कैसे पाएंगे। हाँ। चित्र बात है यार बड़ी। यही बोल सकता हूँ मैं कि एनसीईआरटी शुड नॉट रिड्यूस। यस सर। Okay, so we have to move to the next topic now, which is the topic of. Acha, okay. So let's study the next topic, which is a magnetic field lines. Yeah, magnetic field lines. So I will just copy it from NCERT. So these are your. This is the way it appears. So you can see, it is the magnetic field lines are coming out from the North Pole. यस। ध्यान से देखो, नॉर्थ पोल ऊपर वाली साइड पे वहां से निकल रहा है। और अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइंस आर कंप्लीट, पूरा लूप है। दिख रहा है, ये लूप है ये। सो या दे आर यस सर। क्लोज्ड। ये यहाँ से जा रही है और अंदर जो है बंद है। इट्स अ लूप। यस सर। ओके, एंड सो ये तो एक्सिस हमें पता है, मैग्नेटिक हाँ। एक्सिस। और सो लुक एट द फिगर नंबर A. So this is a bar magnet and this is electric dipole, जो चार्ज वाला होता है। तो फर्क देखो ना इसके अंदर, ये यहाँ पे टर्मिनेशन है, इट एंड्स हियर। इलेक्ट्रिक यस। फील्ड लाइंस start from positive and end at negative, whereas they start from north and they come and again end at north, घूम के जो आते हैं। Okay, and you can see at a very large distance the field lines are very similar. यस सर। Okay, or inside the magnet, the field lines are field is uniform. काफी, मतलब ये जो है पैरेलल लाइंस ही हैं ऑलमोस्ट, ये वाली। यस सर। ओके, बस। So what we are studying is a bar magnet. What a ओके। disgusting way of teaching this यार, कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। There is nothing. Idiots. दो बढ़िया डायग्राम बनाया, एक दो लाइनें लिखी और दी एंड कर दिया। यस सर। समझ में नहीं आया व्हाट इज द इंटेंशन। हो गया चैप्टर खत्म इनका।
अच्छा, कुछ बताया नहीं व्हाट इज अ बार मैग्नेट, how does it behave and all that. So you can see the one characteristic which is very visible is the concept of the continuous closed loops that you see in the figure number 1. ये this is the magnetic field due to a current carrying conductor. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक्चुअली बार मैग्नेट है, सिमिलैरिटी दिखा रहा है, Yes, sir. ये दोनों बहुत सिमिलर है. ये बेसिकली Hmm. सोलोनॉइड है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी. फिगर नंबर 2 हाँ. is the magnetic field lines due to a solenoid, and you can see a solenoid and a bar magnet, the field lines are almost identical, बिल्कुल ही सेम है. Yes, तो sir. जो एक बार मैग्नेट होता है, राइट, इट बिहेव्स लाइक अ सोलोनॉइड ओनली. Hmm. उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है आइडेंटिकल टू सोलोनॉइड ही है, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से. वो पढ़ा था हमने, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ड्यू हाँ. टू अ Yes, sir. सोलोनॉइड. Hmm. समथिंग वेरी सिमिलर इज देयर. एंड ये थोड़ा अलग है. दिस इज मोर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग शोन. ये दिख रहा है ना, ई लिखा हुआ है यहाँ पे. Yes, sir. So bar, मतलब basically they're trying to say the bar magnet is like a solenoid. That's a aim of this diagram. Okay. So these magnetic field lines are also called as magnetic lines of forces. But magnetic field lines एक better word है. Hmm. Yes, sir. Some people say magnetic lines of forces. You don't need to follow that. जरूरी नहीं है इसको follow करना. ठीक. Okay. एक क्वेश्चन जो आता है इसके ऊपर वो ये आता है कि what are the properties of magnetic field lines. So I will just copy them and discuss one by one. Theoretical question है again. हाँ. एक और दो. ठीक है. ठीक है. So you can see the magnet, the pattern of, अगर आप लोहे के फाइलिंग्स छोटे छोटे बुरादा रख दोगे ना लोहे का इनके सोलोनॉइड के पास या बार मैग्नेट के पास, तो वो अरेंज हो जाएंगे इसी पैटर्न में. बचपन में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, कीलों का करते हैं शायद उसमें भी, लेकिन फाइलिंग्स ही होती हैं, बुरादा ही होता है. इफ यू कीप दैट बुरादा इन अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, द वो जो लोहे का बुरादा होता है वो ऐसे ही अरेंज हो जाता है फील्ड लाइंस के साथ. You can see the shape of magnetic field lines. First property of magnetic field lines is that they form continuous closed loops. This is Hmm. unlike the electric dipole where the field lines begin from positive charge. ये मैंने बता दिया था already, ठीक है. Yes, sir. Second, the tangent to the field line at a given point represents the direction of the net magnetic field. So if you pick up, for example, this particular magnetic field line, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है मान लो आपकी, ठीक है. ठीक है. इसके ऊपर अगर आपको पता लगाना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सर्कुलर मोशन की तरह पिक अप दिस एंड ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट. This will give you the direction of the magnetic field at that point. Okay. Tangent to the magnetic field line. The tangent to the field line gives the direction of the net magnetic field at that point. Okay, so if you have large number of field lines crossing per unit area, stronger is the magnitude of magnetic field. So if you can see, इसके अंदर जो एरिया 1 है फिगर नंबर 1 में, हाँ. सी एरिया नंबर 1, Okay. कहीं 1 छुपा हुआ है कहीं पे, 2 तो दिख ही रहा है. दिस इज वीक, यहाँ पे कुछ खास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नहीं.
Yes, sir. right? But if you see the 5.2a, the B is larger around region 2 than in region 1, okay? रीजन 2 1 कहाँ है? रीजन 1 वो नहीं दिख देख गए? रहा हूँ। अच्छा, दिख गया, दिख गया, दिख गया। कहाँ नीचे पर? है, सॉरी। नीचे नीचे नीचे, ये रहा। बेवकूफ मसल है। एनीवे, सो दिस इज योर ये दिख रहा है रीजन 2 1, हाँ, yes, एंड दिस इज, सो यू कैन सी रीजन 1 हैज मोर फीड लाइंस, रीजन 2 में तो कुछ है ही नहीं, देख, हाँ, और रीजन 1 में कुछ तो है। एंड लुक एट दिस रीजन, देयर इज नो स्पेसिंग, काफी कम है yes, स्पेसिंग, सो दिस इज हाँ, वेरी स्ट्रांग। Okay, then fourth, the magnetic field lines don't intersect. तो अगर इंटरसेक्ट कर गई तो यू विल हैव टू टेंजेंट्स, राइट? वन टेंजेंट, जैसे ये दो फील्ड लाइंस हैं, if you have to decide the magnetic field line, then you will say I'm going to draw tangent, so you will draw tangent here also and a tangent here also. yes, sir. So at this point the magnetic field will have two directions then, which is not possible, Hmm. so they don't intersect. उल्टा प्रूफ है, अगर इंटरसेक्ट करती तो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता वो दिखाता कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, बट वो Hmm. पॉसिबल नहीं है, इसलिए दे डोंट इंटरसेक्ट। ठीक है। क्योंकि अब जब जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो एक ही आती है प्रैक्टिकली, दो नजर नहीं आती है। अगर इंटरसेक्ट कर रहे होते तो दो नजर आती हैं, दो नहीं आती, एक ही नजर Hmm. आती है, विच इज एन एविडेंस कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्शन में एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो हो जाती हैं, जो नहीं नजर आता। Hmm. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन कीप अ मैग्नेटिक कंपस एंड देन यू कैन सी, जैसे कि आयरन फाइलिंग है वैसे ही मैग्नेटिक कंपस की सुई भी घूमती रहेगी अलोंग द, तो ये ट्रेस भी कर सकते हो आप उसको, मैग्नेटिक फील्ड को। दिखता तो नहीं है, आयरन का बुरादा डाल दोगे तो नजर आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से अरेंज्ड है, बट मैग्नेटिक कंपस भी अगर रखोगे पेपर पे और एक मैग्नेट रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, उनको ज्वाइन करते जाओ सारे पॉइंट्स को, तो वो बन जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। Okay. यस, so magnetic field lines are not lines of forces, okay, just be very careful. So you don't have to use the word lines of force. Some people say na magnetic lines of forces, they are Yes, sir. not, हाँ, they're only magnetic field lines. ठीक है। And remember, magnetic field lines have no ends, Hmm. so they continue through the interior of the magnet. You can see in the diagram, हाँ, ये सारे के सारे they are inside the magnet also, Hmm. बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर उसको आप देखोगे तो वो इट एंड्स, टर्मिनेट होता है,
जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट नहीं होती हैं, दे आर कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स, दे कंटिन्यू थ्रू द मैग्नेट ऑल्सो, मैग्नेट के अंदर से भी गुजर के जाती हैं. Yes, sir. Yeah. So this is the diagram actually. I was looking at one. If you can see this, it's more 3D kind of diagram. Just see this. So if you notice, this is a solenoid. So the magnetic field is very similar क्या, identical to a bar magnet. Yes, sir. Okay. So magnetic flux भी होता है, जैसे electric flux होता है, वैसे ही magnetic flux भी होता है. So there is something called as a magnetic flux. I think we'll go to the next page now. ठीक है. हो गया इसका अपना. Magnetic flux 5b. वही जैसे कि E dot A था, if you remember, this is B dot A. Okay, so magnetic flux अगर आपको निकालना हो और एक एरिया दे रखा है, तो फ्लक्स मैग्नेटिक इसी का d/d करते हैं, if you remember. हाँ. ये पढ़ चुके हैं. ओके, B dot Yes, sir. D है, dot product. A is the ठीक है. perpendicular vector on the loop. हाँ. Weber and all that, right? So remember that magnetic flux through a closed loop. Magnetic flux through a closed loop is always zero. ठीक है? ठीक है. And but charges के केस में it is not so. And but electric flux is not zero. देखो प्रॉब्लम मतलब फैक्ट ये है कि अगर एक बार मैग्नेट है, वो कभी भी अकेला नहीं आता, नॉर्थ और साउथ लेके आता है. इफ यू हैव अ लूप, देन द बार मैग्नेट जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और इससे लिंक्ड है, उतनी फोर्स लाइंस इसके थ्रू जाके एंटर हो रही हैं साउथ पोल में. तो इफ यू टेक अ क्लोज लूप लाइक दिस, you will have a situation that the number of field lines which are leaving it is equal to number of field lines entering it. क्योंकि दो हैं इसके साथ. लेकिन चार्ज के केस में क्या होता है, चार्ज में एक पॉजिटिव चार्ज है, Yes, sir. उसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे निकल रही हैं. हम्म. ये लूप है. पोल के अंदर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक पोल के अंदर whatever is the number of field lines which are entering will be equal to the number of field lines which are leaving. So the magnetic flux through a closed loop is always zero. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं हो पाता क्योंकि अकेला चार्ज होता है, तो अब पॉजिटिव चार्ज है तो अवे हो गया. Yes, sir. बट नॉट इन द केस ऑफ अ मैग्नेट. मैग्नेट में जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, जैसे ये अभी हम लूप को देखें, तो लूप में से अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, लेकिन उस साइड से फिर एंटर भी तो कर रही है. Yes, sir. तो एंट्री इज इक्वल टू एग्जिट इन द केस ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो मैग्नेटिक फ्लक्स attached with a closed loop is zero. But electric flux due to a closed loop cannot be zero.
ठीक है ये क्वेश्चन आया था एक बार बोर्ड में, ये वाला। सर। हाँ, मतलब nobody could answer it. ओके So गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म जो है वो है BdA इज इक्वल टू जीरो। वैसे तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, बट गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इज दिस, क्योंकि ओके वो इज इक्वल टू जीरो। If you get a ठीक है bar magnet and you want to find what is the net magnetic field through any closed surface due to the bar magnet, you will get that it is equal to zero. ठीक है Let me just. So you have a electric field के अंदर you have this some body 3D, इसके अंदर एक plus q है. So you can see, right, the charge is leaving the closed surface. Gauss तो यही होता है ना, यस सर जब गॉस लगाते q upon epsilon naught. That is what Gauss is all about. You करेक्ट calculate the flux as the total charge enclosed divided by epsilon naught gives you the electric field flux. In the यस सर case of Gauss law of electrostatics, right? So you are able to establish a relationship between the charge and its associated electric flux. ये flux है, ये charge है. So how you can, with the help of a charge inside a loop, sorry, a closed surface, you can find the flux associated with the charge. ये ठीक है जीरो नहीं आया फ्लक्स, बट अगर आप यही चीज बार मैग्नेट के केस में करोगे, विच मीन्स यू कीप अ सरफेस लाइक दिस एंड यू कीप अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में तो नॉर्थ पोल से तो निकल रहा है, लेकिन भाई उस यस साइड सर से एंट्री भी तो हो रही है। एंट्री भी हो रही है तो हम बोलते हैं कि जो BdA दैट इज इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस, the magnetic flux associated with a closed surface is zero. This is the statement of Gauss law of magnetism. The Gauss law of electrostatics is this. क्योंकि यस सर यहाँ पे एक ही अकेला चार्ज हो सकता है ना, बट लेकिन यहाँ पे नॉर्थ और साउथ कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ पे एक और चार्ज लिख दूं माइनस क्यू, देन व्हाट इज द नेट फ्लक्स? जीरो। यस सर चार्ज enclosed will become Q plus minus Q, हाँ ठीक है जीरो आ जाएगा। यस सर बट चार्ज तो अकेला रह सकता है ना, हम्म जरूरी तो नहीं है कि यहाँ मैं लिखूं, लेकिन नहीं, मैग्नेट में चॉइस नहीं है, यू हैव टू पुट इट इक्वल टू जीरो। द फ्लक्स ऑफ अ मैग्नेट associated with the closed surface has to be zero, क्योंकि जितना एंटर हो रहा है उतना लीव भी कर रहा है। तो ठीक गॉस है लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इज दिस, BdA is equal to zero. ठीक है समझ गया Not very difficult, थोड़ा इतना ही काफी है हमारे लिए। ओके, ओके सो ओके, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, एक वर्ड लिखा है, गॉस लॉ। ये जो, if you see this, I will go to the previous page and show you how they have beautifully explained it. Without doing anything, they have explained it. So let me just show you what they have done. ये डायग्राम दिख रहा है, और look at this. यस सर अब इलेक्ट्रिक फील्ड में you can see it is leaving, right? यस सर But in the case of magnetic flux, you can see it is the loop, जितना एंटर हो रहा है उतना ही लीव भी कर रहा है। ये वाला, ये इसमें तो एंटर ही दिखा रहे हैं वैसे, यस सर जैसे कि यहाँ दिखा रहे हैं, बट रिमेंबर ये आता ऐसे है, एंटर भी हो रहा है फिर यहाँ से।
एक लाइन लिख दी, समझाया नहीं समझा है। कि भाई ये व्हाट आर वी ट्राइंग टू कन्वे टू यू, नथिंग इज बीन एक्सप्लेन्ड. यस। Let me see if there is anything else also in NCRT which is. So if okay, I think I have already told you that if you keep a magnetic compass in the magnetic field, it will point towards the tangent, the direction of the magnetic field. यस सर। Wow. Okay. ये भी okay. Extremely brief explanations. Just formality है, लिख दिया. Okay, so look at this. So this is a paragraph that tells you that जो हमने डायग्राम ऊपर बनाया था एक वो सोलोनॉइड का पिछले पेज में, that the solenoid magnetism is this one. Okay, so I'll just copy it and paste it on the next side. ये NCERT का पैरा, the in this para, तेरी okay, so the resemblance of magnetic field lines for a bar magnet and a solenoid suggests that bar magnet may be thought of as a large number of circulating currents, to analogy with a solenoid. Cutting a bar magnet in half is like cutting a solenoid. We will get two smaller solenoids with weaker magnetic properties. Because number of turns come हो गए. The field line remain continuous, emerging from one face of the solenoid and entering into the face. One can test this analogy by moving a small compass in the neighborhood of a bar magnet and current carrying finite, and noting the deflection of the needle is same in both the cases. To make the analogy, we calculate the axial field of a solenoid as depicted in figure 5.3. We shall demonstrate that the large distances, the axial field resembles that of a bar magnet. लेकिन bar magnet का जो axial field है, उसकी derivation समझाई नहीं क्या होती है. Where is it? सीधा लिख दिया बार मैग्नेट के जैसे होता है, लेकिन ये बताया नहीं कि एक्सिस पे कितना होता है बार मैग्नेट के और उसके इक्वेटर पे कितना होता है. This is also the far axial magnetic field of a bar magnet, which may be obtained experimentally. So bar magnet का magnetic field at axis and equator दोनों missing है, एक formula लिख दिया बस. The magnetic moment of a bar magnet is equal to the magnetic moment of an equivalent solenoid. Okay, so इसका जो भी magnetic moment है, it is same as the magnetic moment of a bar magnet, क्योंकि दोनों बराबर माने जाते हैं. Okay, Yes, sir. let's discuss then the magnetic field produced by a bar magnet. इन्होंने तो बताया नहीं, एक फॉर्मूला लिख दिया इक्वेटर का. Okay, so let's talk about a bar magnet. And let's study the magnetic field due to a bar magnet at magnetic axis and equator. ठीक है, बिल्कुल सेम होता है जैसे कि you have that electric dipole. Only difference is now you have mandatory south pole and north pole have to be together mandatorily. Okay. So this is your south pole and this is your north pole, and this is the magnetic length. So we are going to find it at a point which is on the axis
इसे राइट साइड पे निकाल लेते हैं और इस लाइन को मैं बना लेता हूँ एक ये एक्सिस हो गया इसका हम्म और okay, और एक्सिस के ऊपर व्हाट आई डू इज आई टेक अ पॉइंट विच इज सो टोटल लेंथ 2L है इसकी, तो दोनों हम्म साइड पे जो लेंथ हो गई आधी आधी LL हो गई, ये मान लो हाफ पॉइंट हो गया। सीधा बन जा भाई। ओके, सो दिस इज योर L and this is also your L. हम्म Okay, and the length is actually measured from the pole, not from the end of the magnet. जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो ये थोड़ा बड़ा बन गया लेफ्ट साइड में, तो थोड़ा I'll सा shorter it. And we are finding the magnetic field at this point. ये दिख रहा है ये. So let the distance from one of the poles be equal to R. हम्म पोल से दिखाता हूँ क्योंकि फिर नहीं तो एंड ऑफ द पोल की जगह वो नजर आने लग जाएगा। यहाँ से निकाल रहे हैं हम, ठीक है। ठीक सो है इफ यू व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप अ यूनिट पोल हियर हम्म एक साइड पे, और उसके ऊपर दोनों की वजह से फोर्स निकालनी है। सो दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ एंड यू हैव अ हम्म, पोल हियर ऑफ 1 यूनिट। ओके, सो लेट्स कीप अ यूनिट पोल। एग्जिस्ट तो नहीं करता यूनिट पोल क्योंकि उसका भी एक भाई होगा पीछे, साउथ पोल। फॉर द टाइमिंग वी आर इग्नोरिंग इट, वी जस्ट कीपिंग अ यूनिट पोल जो एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेट्स डोंट एग्जिस्ट एज मोनोपोल्स, दे हम्म, हैव टू बी डाइपोल्स। तो इसका कोई ना कोई राइट साइड पे साउथ पोल होगा, बट हम अभी इस पे फोकस लगा रहे हैं। तो इसके ऊपर एक रिपल्शन तो यहाँ से आएगी, ये नॉर्थ है, यस सर एक रिपल्शन तो यहाँ से आएगी हाँ और एक अट्रैक्शन यहाँ से आएगी इसके ऊपर। सो वी विल फाइंड द रिजल्टेंट कि व्हाट हैपेंस टू द नेट फोर्स ऑन इट। सो एफ नॉर्थ will be given by mu naught, Coulomb's law of magnetism. Okay, mu naught upon 4 q m upon कितना डिस्टेंस है ये, टोटल ये L है, ये वाला L है डिस्टेंस। तो नॉर्थ पोल का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, L प्लस R। यस सर तो L प्लस, नहीं सॉरी, ये जो डिस्टेंस है यूनिट पोल का, द मेजरमेंट थी, इफ यू रिमेंबर द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, तो सेंटर से होती है वो। आर, आर इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है तो ये मैं डाल रहा हूं आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और साउथ पोल की तरफ से अगर मैं देखता हूं, सो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम आर प्लस एल होल स्क्वायर। राइट, सो दिस यूनिट पोल is experiencing two forces, one repulsion from here, one attraction from here. And you can see कि R minus L is very small, subtraction. यस सर So this repelling force will be higher, attraction will be smaller. But we have to find the magnetic field strength B due to a magnet, right? So let's calculate that. Let's calculate the B due to the, so B along the axis will be the F नॉट माइनस एफ एस। ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन है। दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट द रिवर्स नेचर ऑफ अट्रैक्शन, ये रिपल्शन है, ठीक है। सो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन 1 माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 upon r plus L whole square. So solving it, you will get mu naught upon 4 pi multiply by 4RL divided by R square minus L square. L square. ठीक है? And ठीक so है this is your magnetic field B axial. हम्म Okay? B axial निकाल लिया हमने. Remember, this is the force on one
unit pole. So actually the force per unit pole, एक यूनिट पे जो वो लगती है वो B होता है, हम्म, ठीक है। और तो ये दोनों फोर्स जो हैं ये एक्चुअली B हैं ड्यू टू द इंडिविजुअल। तो ये दो न्यूटन नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहे, ये न्यूटन पर पोल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, विच इज B। ऐसे लग रहा है ठीक ना, है। हाउ कैन मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू फोर्स? यस सर। डायमेंशनली गलत है, बट इट इज ऑन यूनिट पोल। सो यूनिट पर यूनिट पोल पे जो न्यूटन है दैट इज कॉल्ड एज B ओनली। सो इसको सॉल्व करा। नाउ इफ यू नो, हमने अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी पढ़ा था। इफ यू रिमेंबर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था m was equal to qm into 2l। ठीक है, सो ये आपका qm भी हो गया यहाँ पे। ये qm नहीं लिखा था हमने, तो लिख दिया मैंने। सो इसमें से इफ यू पिक अप 2l एंड qm, you will get m r 2 mr। I picked up qm and I picked up 2l, तो एक 2r बच गया, 2r, और एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया, राइट, अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। बिकॉज वी नो दिस, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यही डेरिवेशन ई में भी सेम ही होती है, उसमें पी आ जाता है ऊपर। यस सर। ये तो इसमें एम आ गया उसकी जगह पी का इक्विवेलेंट। सो योर बी एक्सियल which is coming out. If it's a short magnet, then remember the R is very large as compared to L। अगर आपका मैग्नेट बहुत छोटा सा मैग्नेट है तो ये जो R है it is very large as compared to L, so this part gets ignored। L square has no value in front of R square, so approximation ये है, for this approximation for a short magnet the magnetic field on the axis therefore comes out to be mu naught upon 4 pi 2 mr upon r raised to power 4। इसको जीरो ही डाल दिया, r कट गया, so the answer is mu naught upon 4 pi k multiply by 2m upon r cube, where m is magnetic dipole moment, m is a vector south to north। Electric dipole moment was also a vector। ठीक है। काफी गलत कर रहे हैं एनसीईआरटी वाले, जिस तरह से कटाई करी है इन्होंने वो ठीक नहीं है। यस सर। एक बढ़िया डायग्राम दिखाऊं डोमेन थ्योरी का? यस सर। नाइस वन, so it will give you a very good idea as to what is happening at the domain level when you do, जब दूसरे मैग्नेट को रगड़ते हैं ना किसी भी मटेरियल पे, यस सर। so that domain theory how it works। look at this, very nice। देखो रैंडमनेस, देखो पहले डोमेन्स की, यस सर। right? So this is an unmagnetized ferromagnetic material, so you're magnetized by an external magnet। तो अब अलाइनमेंट सुधर रही है, दिख रहा है?
हम्म, और फाइनली सारे एक ही में हो गए। तो देखो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, इसके सारे डोमेन एक डायरेक्शन में हो गए, तो कैसा बन गया? yes, फुल फ्लेजेड मैग्नेट। हम्म, तो एमआरआई करवाने जाते हैं ना, तो देयर यू हैव अ सिलेंड्रिकल कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम्म, एमआरआई करवाने जब जाते हो आप, तो वहां भी मैग्नेटिज्म का खासा यूज होता है। नाम ही वही है, okay, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग। yes, दिस विल बी ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली। एक लाइन लिख दी और ओके हो गया। Tell me what will happen like this if I bring a compass. It's a very basic question, but मजेदार है थोड़ा सा। So look at this। एक कंपास रख दी है, हम्म, और उस कंपास के नीचे यू हैव अ मैग्नेट। अच्छा, बार मैग्नेट है। मैं लेट मी हम्म, ड्रॉ द बार मैग्नेट, ओके। सो ये बार मैग्नेट है यहाँ पे। दिस इज द बार मैग्नेट, ओके। और बार मैग्नेट okay, का ऊपर वाला साइड जो है वो इट्स अ नॉर्थ पोल। okay, So this is your north pole and this is your south pole. What will happen to the compass? डिफ्लेक्शन होगी, हाँ जी। डिफ्लेक्शन होगी, यस। इधर आ जाएगा ना घूम के, यस सर, साउथ पोल की तरफ, तो कंपास ऐसे आ जाएगी। करेक्ट, ओके। सेकंड इज द magnetic field of a bar magnet again at an equatorial point, perpendicular bisector. ओके, So now you pick up this bar magnet, this is your bar magnet, and now what you do is you draw a line perpendicular to it, bisecting it, and the a distance is L and L. Perpendicular distance is R now. Okay, and again you keep a unit north pole here.
single. This is your south pole and this is your north pole. तो इस तरफ तो अट्रैक्शन है सीधी सीधी Yes, sir. यूनिट पोल की, और इस तरफ रिपल्शन है. Hmm. So that's your repulsion. So the resultant force you will get is this. Again, very similar to the concept of electric dipole Hmm. Yes, sir. on the axis. So this is your equatorial. And if you calculate the individual forces, Fn is equal to mu naught upon 4 pi. ये hypotenuse हो जाएगा. Hmm. ये L है और ये R है. R एक ही बात है, R Yes, sir. फ्रॉम द सेंटर. तो दिस इज L/2. सॉरी, यहाँ से नहीं मेजर होता, ये यहाँ से मेजर होता है. So this is from here to the, ठीक है. ठीक है. और तो Fn is equal to mu naught Q नॉर्थ का देख रहे हैं ना अभी हम. तो ये हाँ. डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R² प्लस L² का अंडर रूट. द Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज दिस साइड. इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम. QM मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि दूसरा तो 1 है, अपॉन R² प्लस L² का स्क्वायर. F साउथ भी है, ये रिपेलिंग है ये वाला. Yes, sir. F south is mu naught upon 4 pi QM into 1 upon under root of Coulomb's law of magnet. Okay, so attraction. This one, Yes. attraction. This north pole is getting attracted towards the south pole. So yeah. Yes, sir. Okay, and repulsion, attraction, resultant of these two. इन दोनों के कंपोनेंट लोगे तो एक जो कंपोनेंट दोनों का, ये वाला, एंड आई विल यूज द एरो. इसका जो कंपोनेंट दो है वो एक ये और एक लेफ्ट पे, जो रिपल्शन वाला दिखा रहा हूँ मैं. आई एम ड्राइंग इट्स टू कंपोनेंट्स. ये दो इसके कंपोनेंट बन गए रिपल्शन वाले के, एक वाई एक्सिस में एक एक्स एक्सिस में. सी पैरेलल है, स्ट्रेट है. Yes, sir. तो मैंने अभी रिपल्शन वाले का दिखाया है और मैं इसको तो इसके दो कंपोनेंट आई एम शोइंग विद डिफरेंट कलर. इफ यू सी द डाउन बिलो, नीचे वाला, उसके जो दो कंपोनेंट है, एक नीचे बनेगा एक ऊपर बनेगा. Yes, sir. ये नीचे बनेगा, वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले से, और एक लेफ्ट पे बनेगा. तो वो लेफ्ट वाले दो ऐड हो गए हॉरिजॉन्टल, Hmm. Yes, sir. और वो कैंसिल हो गए. तो जो नेट आएगा इसका एक्सियल पे, दैट विल बी द, इफ वी नो दिस थीटा, तो इट विल बी द हॉरिजॉन्टल पार्ट. Hmm. थीटा तो हमें मालूम ही है क्योंकि आर और एल Yes, sir. मालूम है, तो कॉस थीटा भी हम निकाल ही सकते हैं. Yes. So the answer will come out to be the twice of the horizontal components, double of horizontal component. Okay. So double of the horizontal component. So दोनों का Fn का भी cos थीटा, और जो फोर्स ड्यू टू साउथ पोल है उसका भी cos थीटा. ठीक है. सो दोनों को ऐड कर दो आप. 2Fn cos theta is equal to 2 mu naught upon 4 pi q by under root of R² plus L² का स्क्वायर.
into cos theta will be base upon hypotenuse. Base is L and the hypotenuse is this. ये base हो गया. Okay. Hypotenuse is r square plus L square का under root. So this will become equal to B equator आ गया. Okay. Again remember that this is not, we are adding two forces but writing B. वो इसलिए कि per unit pole है ये. And इसके अंदर से we can again pick up 2L and Q and make it magnetic moment, dipole moment. So mu naught into M upon 4 pi r square plus L square 3/2. If it's a very short magnet, then R is very, very large as compared to L. R is very large as compared to L. Then what happens because of that? इसको approximately 0 ले लो. So this will become mu naught into M upon 4 pi r square into 3/2. So mu naught M divided by 4 pi r cube. That's your magnetic field due to a. So यही फॉर्मूला उसने लिखा हुआ था एनसीईआरटी के अंदर कि अलोंग द इक्वेटर तो ये होता है सोलेनॉइड का भी और इसका भी. डेरिवेशन या कैसे होता है कुछ पता नहीं सर पैर. Yes, sir. ठीक है. ठीक है. Now let me show you and go to NCERT, in fact not show you. तो मैं 1 मिनट में आया. क्या हो गया? 1 मिनट में आया. अच्छा ओके नो प्रॉब्लम. Yes, sir. Okay, so let me show you what they have done. ये देखो. If you go to NCERT and start doing questions, look at this question.
फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट, यस सर। एक्सिस पे और इक्वेटर पे, और इक्वेटर। थ्योरी में गायब है। हाँ वो करा ही दिया सर। तो आता है क्वेश्चन। ठीक है। So what we will do in the evening is we will practice questions on bar magnet now in the evening. I will not ओके। start a new topic, but you can see ये direct application है फॉर्मूले की, दिख रहा है ना? यस सर। एक्सिस पे भी निकाल सकते हो, इक्वेटर पे भी हमने डिराइव करा है अभी। हाँ ठीक है। फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। तो मतलब आते हैं, देन वी विल डू क्वेश्चंस ऑन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन थोड़े से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। आई विल जस्ट शो यू दिस ऑल्सो कि अच्छा, टॉक अभी हमने नहीं करा। नहीं, हमने इक्विलिब्रियम भी नहीं करा। हाँ, अब देखो ये why the solenoid chapter and this go hand in hand. So what you have to do is please revise a solenoid a bit. ओके। Okay, let me show you why, because now there will be some mixing of these two. Okay, bar magnet or solenoid, bhai. हाँ। So there is a solenoid of 800 turns and area so and so carries. Explain the sense in which the solenoid acts like a bar magnet. What is the associated magnetic moment? Magnetic moment अभी हमने पढ़ना है डिटेल में, but we यस। already know what's a magnetic dipole moment. ठीक है, बट सोलोनॉइड के बारे में जस्ट टेक अ क्विक रिवीजन। हाउ इज, अभी मैंने डायग्राम में दिखा दिया उसका मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बता दिया कि दोनों आइडेंटिकल हैं, बार मैग्नेट और सोलोनॉइड। तो ये लिखने भी आना चाहिए, इन व्हाट सेंस आर दे आइडेंटिकल। ओके। when a solenoid has a current flowing through it, it also gets into the zone of creation of a south pole and a north pole, just like this. उसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और दूसरी साइड से अंदर घुसती हैं। एक साइड से निकल तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन अगर बदलोगे तो दो साइड ऑफ द जो है सोलोनॉइड रिवर्स कर सकते हैं उनके पोल्स को, करंट की डायरेक्शन उनमें रिवर्स कर दो। तो व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, बोल सकते हैं ना, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलोनॉइड। देन दे कैन आस्क यू कि एक अगर बार मैग्नेट होता की मैग्नेटिक लेंथ कितनी होती जो सोलोनॉइड के बराबर मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड तभी निकाल पाओगे जब सोलोनॉइड का बी याद है। ओके। समझ आ गया? यस सर। नहीं आ गया सर। आ गया ना? सोलोनॉइड विल हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, the magnitude is equal to the magnetic field of a bar magnet on equator. बाकी सब कुछ दे दिया बार मैग्नेट के बारे में, बताया कितने डिस्टेंस पे सेम मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व होगा, लेकिन सोलोनॉइड की वजह से बी नहीं निकलेगा तो यूज कैसे करोगे इसको? वही। सो टेक अ क्विक लुक एट सोलोनॉइड। मैं भी बीच बीच में उसे कवर करता रहूंगा, बट यू विल सी सिमिलर क्वेश्चंस नाउ कमिंग अप। सो इन द इवनिंग वी आर गोइंग टू कवर न्यूमेरिकल्स ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक टॉपिक और भी करना है हमें, which is what happens to our bar magnet which is kept in an external magnetic field। वो घूमता कैसे है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, रुकता कहाँ पे है जाके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। ठीक है, सी यू देन, बाय। थैंक यू सर। मैं आई एम गोइंग टू सेंड यू सम पेपर्स नाउ वन बाय वन। यस सर। Likely I will start sending these tomorrow and I ठीक will है। make a list. So what I will do, I will follow the CBSE pattern exactly for every chapter, which means I will give you 33 questions, out of which 18 are going to be MCQs. Last 3-4 are going to be 5 markers, and then 2 markers and 3 markers, and reasoning assertion also included. बिल्कुल जैसे कि बोर्ड का पैटर्न है, सेम, बट एवरी चैप्टर 3 hours 33 questions, identical pattern to board। ठीक है। 33 क्वेश्चंस पर, बट 18 MCQ है, और 1 मार्कर बहुत सारे हैं, 2 मार्कर है, और 2-3 5 मार्कर्स। ठीक है। या मैं थोड़ा थ्योरी को बढ़ा दूंगा, so that you have to write something instead of just doing tick marks। यस सर। टाइम विल बी 3 hours, टाइम में करना है, और फिर बताना है क्या नहीं कर पाए और डिस्कस करना है उसको। ठीक है सर। आई विल गिव यू द सोल्यूशन, बट आई वुड लाइक टू डिस्कस योर वीकनेस देन। ठीक है सर। सोल्यूशन से शायद याद ना हो, वो मैं समझा दूंगा। ठीक है।